So where did we stop in last class? Any idea? So after the units of time, we done the units of time and the mass. So we were getting some numericals. So we started numericals. We started doing numericals. Yes, sir. We had done two. How many we did? Two. Okay. Do you want me to do the rest or can we go ahead? Go ahead. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Okay. So numericals I think similar. Yes, sir. Distance, time, speed formula you can do that. Yes, sir. And they involve certain unit conversion. So we'll start with next unit, which is measurement of length. Yes, sir. Measurement of length. So, what do we need to measure length in general? We need an instrument, right? Scale, right? So, in general, to make any measurement, in general, take any measurement, we need an instrument. Okay, we need an instrument. So for measuring length, what do we need? We are familiar with meter scale, right? Yes, sir. For measuring length, we need a meter scale. Okay. So this you are familiar with. But what is the smallest measurement a meter scale can make? Millimeter. 1 millimeter, right? So the smallest measurement any instrument can make is called least count. What is it called? Least count. Least count. Or tape. Accurately. It is called its least count. Okay. Or in short, we'll write it as LC. So what is the least count of scale you said? 1 millimeter. Therefore, LC of meter scale is equal to 1 millimeter. What if you have to measure any smaller length? Let us say thickness of a thin wire. Thickness of a thin wire or a metal sheet. Can you measure it with the help of the scale? No. So we need different scales, right? To measure lengths smaller than 1 millimeter, we require different measuring instruments. Okay, such as vernier calipers,
and screw gauge. Okay. So the least count of vernier calipers and screw gauge is much smaller than 1 millimeter. Okay. So first let us see how the scales, how the instruments look like. So of course the diagram is given in your book. I'll try and show you on the monitor. Just type vernier calipers. This. Vernier calipers. Great. Okay. So we'll see the images. I can Let's see this diagram. This is more clear. So look here. So in the lab, have you seen this instrument? Yes, sir. In your school they have shown Yes, you, sir. right? So one is you have the old meter scale, right, which is called the main scale. This is called the main scale. And there is another scale attached to this which can slide over the main scale. Okay? This is called vernier scale. Okay, this in your book you can see that there is a diagram. That is Selena. Here's this diagram. So this gray color scale, right? This has got 10 divisions. It has got 10 divisions. And the main scale is the usual meter scale that you are familiar with. In your geometry or compass box, you have the meter scale up to 6 inches. Or how many centimeters it is? 15 centimeters. 6 inches or 15 centimeters. Okay. But on top of it, what is fitted here is vernier scale, which can slide. So how you can slide it? With the help of this groove wheel. Can you see? So when you hold it like this and turn this gear, okay, it can go left and right. Right? Now, so how to make measurements? So let us say you want to measure the thickness of this pen. Okay? So you have to slide the vernier scale, right? So that you can hold it in the jaws, these two jaws. So when you move it like this or like that, okay? So you can just check which side it is moving. So you have to close the distance, then you have to move it one way. When you have to increase, you have to move it the other way. Okay? So once, before making measurement, first you have to check for zero error. Right? So how to check for zero error? The first division is the zero of the vernier scale. See the marking here? There is a marking on the vernier scale also. And there are so many markings, right? In your book, it has 10 divisions. Does it have 10 divisions? Yes, sir. Okay. So vernier has 10 division, which fits into 9 divisions of the main scale. One less than the main scale. Okay? Is it clear? Therefore, on vernier calipers, on vernier calipers, VC. Okay? VC for vernier calipers. Okay. In vernier calipers, 10 divisions on vernier scale. V for vernier, S for scale. Okay? Fits into 9 divisions on main scale. 9 division on main scale. Okay?
Sorry, on main scale. So I am continuing here. Main scale. So main scale I will write as MS. VS for vernier scale, MS for main scale, right? So what is the length of one division on main scale? 1 millimeter, right? Therefore, one division 10 division on vernier scale is equal to 9 division on main scale. Okay? So then what is one division on vernier scale? Therefore one division on vernier scale is equal to 9 by 10 division on main scale. Right? So now what is the length of 9 division on main scale? 9 millimeter. Therefore 9 by 10 millimeter, one division on vernier scale is 9 by 10 millimeter. Therefore length of or value of one division on vernier scale is equal to 0.9 millimeter. Is that clear? Yes, sir. Okay. So how do we calculate least count? Therefore least count of vernier calipers is given as difference between one division or value of one division on main scale one division on main scale minus value of one division on vernier scale. Okay, so what is one division on main scale? That is 1 millimeter minus 0.9 millimeter. Okay, what is it? So this is now 0.1 millimeter. So this is the least count of vernier calipers. So this can measure lengths up to 1/10 of a millimeter. Okay, so its least count, its accuracy has improved. Okay, its accuracy has improved, right? So this is how you calculate the least count of vernier calipers. There is one more way you can find the least count of vernier calipers. Also, least count of vernier calipers is equal to value of one division on main scale divided by total number of division on vernier scale. So by that logic, the instrument given in your book, value of one main scale division is 1 millimeter and number of division on your vernier scale is 10. Correct? So this way also you can find out. Got it? So before taking measurement by vernier calipers, first thing you will do is calculate the least count. Okay? And generally for all barring few, let us say if the number of division here was 20, then what it will be? 0.2. Exactly. Smallest division on main scale divided by 20. Okay, so it is 0.05. 20 will be 1 by 20 will be 0.05. So least count has even improved. 1 by 20 will be 0.05. Sir, it can for value of one division of ridiculous BS equal to 0.9 mm in divided in weeks, you know. 9.9 is here. These two division, one division here is 0.9. It's less than a millimeter. And least count is difference between them. Understood? So when we take readings, you'll understand how to take readings.
So having now, I will explain the method how to take the measurement. Okay. Can I erase this part? Yes, sir. Yes, sir. So taking measurements using vernier calipers. So first step is step 1. Check for zero error. Okay. First thing you have to do is check for zero error. So how to check for zero error? By closing the lower jaw of vernier calipers. So first you write down the least count, then write this. So what you will do? You just close the jaws, right? So these jaws, without anything, you just close it. So when you close the jaws, look here, there is a diagram given in your book. When the jaws are closed, right? The zero of the vernier and the zero of the main scale, they should coincide. Okay? So if they are not coinciding, then there is an error. Okay? So there are three cases possible. Okay? If zero of vernier scale, okay, coincides with zero of, this is zero, only zero, okay, of main scale, then no zero error. Okay. So first thing, you are making sure whether the vernier scale is zero error or no. So how to check? You first close the jaws together. If the zero, so this is zero of main scale. It should be zero, not ये गलत लिखा है यहाँ पे. It should start with zero. In your book you see zero, and this division is also zero. So the first division, when they are exactly below each other, then the zero of the vernier is coinciding with zero of main scale. So in that situation there is no zero error. Second, there is a case of positive zero error. What is the case of positive zero error? When you close the jaws, the zero of the vernier scale lies ahead of the zero of the main scale. Huh? That is positive. Means, let us say main scale zero is this, right? And when you close the jaw, it lies here. Zero of the vernier scale it lies ahead of the zero of the main scale. It's not matching, like in case of no zero error. It's not here. And in case of negative zero error, the zero is here. Before the zero of the main scale. So what is the meaning of positive zero error? That means when there is no object, still it is showing some length. So that means when you take the measurement, the measured length is always going to be more than the actual length. Then you have to correct for zero error. Okay? Is that clear? So is the difference understood? When is positive? So zero of vernier scale lies ahead of zero of main scale. And in this case, negative zero error is the situation. Zero of vernier scale lies before
0 of before 0 of main scale. Okay, so what is the meaning of negative 0 error? It is always showing length Behind. less than the actual or measured length. So in this case you have to add, and in the first case you have to subtract. So in both cases we subtract only with the sign. Okay. So I'll tell you the method how to calculate 0 error. First, let us assume the simple case where there is no error in the vernier scale. First we'll take reading or measurement without 0 error. Okay. So you have to use the formula. Three cases. Case 1. Okay, first let us write the formula. What is the measured value or observed value? What is the observed value? It is main scale reading plus vernier scale reading. Okay, observed value will be main scale reading plus vernier scale reading. Okay. So this is the formula. And what is vernier scale reading? Where vernier scale reading is equal to coinciding division of vernier scale with main scale coinciding division of vernier scale with main scale into least count. This is how you calculate. So now I'll show you how to actually take the measurement with the help of diagram in a book. So everybody come to figure 1.2 in Selena. You have the diagram? This is which publisher? Evergreen. This is what? Brothers. Okay. So those who are following Brothers, how many of you are following Brothers textbook? Okay. Now look here. The 0 error is shown here, right? So first case is on page number 21. And Selena, for 0 error, you can see page number. In your book, it is which page? 14. Show me the diagram. Where now? Yes, on page 14. Do we have any other publication? No. So, how is the coinciding division? You can see that the 6th division in Brothers is matching with the some division on the main scale. So what is this division? Coinciding division? It is the division on the vernier scale. There are only 10 division. So 10 में से कौन सा मैच हो रहा है? 6 वाला मैच हो रहा है. ठीक है? वैसे ही दूसरा जो डायग्राम है, the coinciding division is both places it is showing 6 division. But now for positive 0 error, the 0 lies ahead of the scale, main scale. See, 0 of the main scale is above, 0 of the vernier scale is ahead of this. Okay. Likewise here the 0 is behind. Okay. So if there was no 0 error, right? If there was no 0 error, both these zeros will be above and below. Clear? So we are now going to take measurement when there is no 0 error.
For that, I will use now the diagram given in Selenium. Come to page number 11. That is page 12. There is this diagram. Okay. Here the vernier scale is shown above. Sometimes they have shown the vernier scale above, sometimes below, because this is schematic diagram. Just two scales are shown. So this is the scale, let us say, without any zero error. So what is the main scale reading for this diagram? You can see the main scale is the reading on the main scale before the zero of the vernier calipers. What is MSR? Reading on the main scale before the zero of vernier scale. So what is it? It's 1.2. What is MSR? So MSR is reading on main scale before zero of vernier scale. So we got the MSR. Just the reading on the main scale before the zero. Now what is the reading on VSR? Coinciding division of vernier scale with main scale into LC. So that is given as P in your book. P is the coinciding division, right? So for this example, P is fourth division on the vernier scale is coinciding. See the diagram? Everybody see the diagram? देखो, you can also see here. 1 after 0, 1, 1, 2, 3, 4. Okay, this is the 0 of the vernier scale, the beginning. This is 0, right? 0 के बाद 1, 2, 3, 4. So the fourth division on the vernier, you don't have it, Selena? Sir, diagram. ये जो स्केल का बिगिनिंग है वो 0 है. स्केल का बिगिनिंग है 0 इधर. ये 5 है. तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये मैच हो रहा है नीचे मेन के साथ. ठीक है? So fourth division of the vernier scale is matching. Pencil से लिख, pencil से. We'll spoil the diagram. ठीक है? So look here. For this case, we are taking measurement here. So what is the main scale reading? So main scale reading is 1.2. Very clearly. उसके बाद में तुम्हारा vernier आ जाता है. ठीक है? अब जो coinciding division है, तो हमारा जो measurement है actually ये vernier से पहले का ये AB इतना हमारा बच जाता है. Clear length जो है main scale का 1.2 आ रहा है plus AB. What is the actual measurement? Main scale reading plus AB. So AB we have to find out using the vernier scale. तो वो कैसे पता चलेगा? What is AB? AB is distance from here to the coinciding division on the main scale minus distance from here to the 4 divisions of vernier scale. Got it? So 4 division of vernier scale कितना होगा? 4 into least count of vernier scale. एक division. समझ में है? 4 into, तो इसको कैसे करेंगे देखो. ये 4th division हो गया. 4 into least count. ठीक है? क्योंकि हमको क्या चाहिए? मेन स्केल रीडिंग पे तो 1.2 मिल गया क्लियरली, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है AB वो भी तो चाहिए. समझ आ रहा है क्या तुमको? हो गया हो. देखो यहाँ पे देखो तुम लोग, जिसके पास सेलिना नहीं है वो देखो इधर बोल के, तुम लोगों के पास तो है. ये मेन स्केल रीडिंग कहाँ पे आ रही है? ये तुम्हारा वर्नियर स्केल यहाँ पे खत्म हो गया. यहाँ पे इस रॉड का हम लेंथ मेजर कर रहे हैं. मेन स्केल पे कितना दिखा रहा है? 1.2 प्लस AB. ये जो डॉटेड डिस्टेंस है ये भी तो है लेंथ रॉड का. रॉड का लेंथ AB तक है, B तक है. तो ये कितना डिस्टेंस हुआ? ये डिस्टेंस होगा, अभी 4th डिवीजन मैच हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ का वर्नियर डिवीजन जो B से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 4 into least count, ये इसका लेंथ मिल जाएगा. least count क्या होता है? वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल, है ना? तो ये कितना हो गया? 4 divisions on the, जिसका लेंथ हमको मिल जाएगा 4 into least count ले लिया, और उसके बाद यहाँ से भी पूरा लेंथ आ गया 4 तक. अब देखो 4 मिलीमीटर हो गया. तो 4 मिलीमीटर माइनस 4 into least count लिया तो क्या मिलता है हमको?
ये हमको ऐसे मिल जाता है लेंथ AB is equal to length of P divisions of main scale minus length of P divisions of vernier scale. तो P को जब कॉमन लेते हैं तो length of one division of main minus one division of vernier, तो यही तो लीस्ट काउंट है, इसलिए P into लीस्ट काउंट आ जाता है। समझ गए? तो जो डिफरेंस वाला लेंथ है AB वो हमको वर्नियर स्केल से मिलेगा, ठीक है? तो तुम इसको ऐसे टेक्निक याद कर लो कि हमको ऐसे करना है। तो इस केस में MSR फॉर द गिवन एग्जांपल इज कितना है 1 पॉइंट, देखो 1.2 हो गया A तक, ये मेन स्केल रीडिंग है, सो दैट इज 1.2 एंड व्हाट इज VSR? VSR is equal to 4 into 0.01 centimeter. What is the least count of the vernier scale? 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. Correct? 0.1 millimeter आया था ना least count, उसके आगे लिख लो और 0.1 millimeter और 0.01 centimeter. अभी main scale हमारा सेंटीमीटर में है, this is 1.2 centimeter. इसलिए इसका least count को हमने किस में कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर. So what is the observed value? Therefore observed value क्या हो गया? 1.2 plus 0.04 सेंटीमीटर. सबको समझ में आ गया? 1.24 सेंटीमीटर. तो ये हमारा रीडिंग सबको समझ आ गया? यस सर। तुमने डायग्राम देखना पड़ेगा तुम्हें. देखो ये डायग्राम कैसा है, यहां तक तो हमारा मेन स्केल है, ठीक है? ये गड़बड़ हो रहा है, 10 डिवीजन. बुक देखो सब लोग, सेलिना का बुक देखो, डायग्राम बनाना डिफिकल्ट है, ठीक है? देख लिया सबने? तुमने देखा क्या सेलिना का डायग्राम? देखा उसको 1.2 कैसे आया वो समझाओ. अरे वो सेलिना नहीं है ना, डायग्राम एक ही रेफरेंस ले सकते, तुम्हारे बुक में वो है नहीं डायग्राम. अच्छा तुम्हारे बुक में कोई मेजरमेंट के लिए भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है विदाउट एरर, ठीक है? बाकी आगे जो भी दिया विद एरर दिया हुआ. तुम्हारे बुक में विदाउट एरर का कोई डायग्राम नहीं दिया, विद एरर 2 डायग्राम दिए. ये वासो है या हाँ ये दिए, देखो नो जीरो एरर का यहाँ पे दिया है, ठीक है? अब इसमें ऑन पेज 22 यू हैव दिस डायग्राम इन योर बुक. ब्रदर्स वाले पेज 22 पे आ जाओ, तो ये वाला डायग्राम देखो, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है? तो अब एरर नहीं है तो इसमें मेन स्केल रीडिंग क्या है तुम्हारी? 10.2 है. तुम्हारा मेन स्केल रीडिंग क्या है? 10.2. 10.2. तुम्हारे बुक में 11.5 क्यों लिखा है? तो ये स्केल ही खराब है. ये गलत है. 10.5 होगा, ठीक है? लेट इट बी 10. सर तुम्हारे बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है फिर वो. देखो बुक का डायग्राम. you're using Selena or at home? So Selena सब टेक्स्ट बुक लेके आओ. सर हाँ वो ठीक है, एस्केप कर रहा है. क्या बंद हो गया? सर वो ऑप्शंस आए थे. हाँ वो ठीक है. देखो इसमें क्या दिया हुआ है? 0 to 10 है ना, और यहाँ रीडिंग क्या दिया है? 11.5. वो क्या होगा? 10.5 होगा. ये गलत है, करेक्ट करो उसको, ठीक है? उसके बाद अब तुमको वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है. तो वर्नियर स्केल रीडिंग में कौन सा कोइंसाइड हो रहा है? 6th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, देखो मेन स्केल के साथ, ठीक है? तो तुम्हारा वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आ गया? 6 into 0.01. तो यहाँ पे सिर्फ ये करेक्ट कर लो, ये 11.5 नहीं 10.5, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है? तो ये तुम्हारा आ गया ऑब्जर्व्ड रीडिंग, ठीक है? तो फाइनल लेंथ क्या हो गया?
So given vernier calipers is free from zero error. ठीक है? तुम्हारे पास यही बुक है? हाँ. तो देख लो तुम्हारे केस में सब लोग अपने अपने बुक का एग्जांपल फॉलो करो. ठीक है? अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें जीरो एरर है. तो ये क्लियर हो गया? अच्छा. अब जिसमें जीरो एरर होता है उसको हम क्या लेते हैं? करेक्ट एरर. If vernier scale or vernier calipers has zero error, then कैसे फाइंड करेंगे उसमें? हमको जीरो एरर करेक्शन करना पड़ेगा. ठीक है? Yes, sir. तो जीरो एरर करेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रीडिंग. जो ये वाला रीडिंग लेंगे उस केस में पहले हम ऑब्जर्व्ड रीडिंग ही लेंगे. ऑब्जर्व्ड रीडिंग उसके बाद क्या करेंगे? माइनस जीरो एरर. जीरो एरर विथ साइन. क्या करेंगे? जीरो एरर विथ दैट. टिक टिक कौन कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? टक 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 आवाज आ रही है. हाँ तो मत करो. सॉरी. टक 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 आवाज मत कर ऐसे. सो जीरो माइनस यू हैव टू सबट्रैक्ट द जीरो एरर और एरर को साइन के साथ लिखना है. तो जो पॉजिटिव एरर है उसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. और जो नेगेटिव एरर है उसका साइन क्या है? नेगेटिव. ठीक है? तो अब देखो. तो हमारे पास दो एग्जांपल है जीरो एरर के. अभी तुम आ जाओ पेज नंबर 14 पे. अब जीरो एरर निकालना कैसे? वही करना है. जो वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कर दो. ठीक है? क्या क्या ध्यान रखोगे? सबसे पहले पॉजिटिव जीरो एरर है कि नहीं वो देख के पता चल जाएगा. अगर जीरो राइट साइड में मेन स्केल के तो पॉजिटिव एरर है. बुक कौन सा है? हाँ पेज 14 पे देखो पॉजिटिव जीरो एरर. अब बताओ क्या वैल्यू आएगी? कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है इसमें? 6. तो जीरो एरर क्या हो गया? 6 into 0.01 और सामने क्या आ जाएगा? प्लस. ठीक है? तो पॉजिटिव जीरो एरर हमारा है तो तुम अपने बुक में देखो जीरो एरर में क्या आ रहा है तुम्हारा. जीरो एरर का कैलकुलेशन होगा ना आगे. कोइंसाइडिंग डिवीजन पहले प्लस साइन लगाओगे. 6 into 0.01 इतना सेंटीमीटर हो गया. तो ये कितना आ गया? प्लस 0.06 सेंटीमीटर. ये पॉजिटिव जीरो एरर है. अब तुम क्या करोगे? ये जो तुमने रीडिंग लिया था 1.24 उसमें से सबट्रैक्ट कर दोगे तो तुम्हारा करेक्ट वैल्यू आएगा. अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो. ठीक है? ठीक है? नेगेटिव जीरो एरर का कैलकुलेशन देखो. नेगेटिव जीरो एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है ना, मान लो तुम्हारा कोइंसाइडिंग डिवीजन है 6 तो तुम क्या करोगे? टोटल वर्नियर डिवीजन में से 6 को सबट्रैक्ट करोगे. ऐसे क्या किया हमने? टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल पे? 10 और 10 माइनस 6 कर दोगे. ठीक है? तो अब तुम्हारा जीरो एरर कितना आएगा इस केस में? -0.04. नेगेटिव जीरो एरर थोड़ा सा ट्रिकी है. तुम डायरेक्टली कोइंसाइडिंग डिवीजन नहीं लोगे. जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसको टोटल नंबर ऑफ वर्नियर्स डिवीजन में से सबट्रैक्ट करोगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट. ठीक है? तो ये थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेगेटिव जीरो एरर. और नेगेटिव जीरो एरर का साइन क्या होगा? माइनस. अब जब तुम इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे तो नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. माइनस माइनस ऐड हो जाएगा. होना ही चाहिए क्योंकि नेगेटिव जीरो जो है जो ऑब्जर्व रीडिंग की वो हमारी कम मेजर कर रहा है क्योंकि जीरो इस साइड में तो उसको ऐड करना पड़ेगा. इसलिए जब हम जीरो एरर विद साइन सबट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव जीरो एरर ऐड हो जाएगा. और जो पॉजिटिव एरर था वो हमको हमेशा मेजर्ड वैल्यू से ज्यादा लेंथ बता रहा है तो उतना हमको माइनस करना है. तो ये पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी. सो देन वील गेट करेक्टेड.
सभी को समझ आ गया? ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान देना, देखो ये वाली चीज यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव एरर में डायरेक्टली जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसको लीस्ट काउंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट हमारा जीरो एरर आ गया पॉजिटिव वाला और उसको साइन के साथ लिख दिया। लेकिन जो नेगेटिव वाला कोइंसाइडिंग डिवीजन है उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है टोटल डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई और उसका साइन क्या करना है नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हमने पूरा वर्नियर कैलिपर्स से कैसे रीडिंग लेते हैं विदाउट जीरो एरर एज वेल एज विद पॉजिटिव नेगेटिव एरर वो सीख लिया। यही चीज हमको स्क्रू गेज में करनी है, सेम चीज रिपीट करनी है, खाली वहां पे मेथड क्या है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। और यहाँ पे क्या स्केल हॉरिजॉन्टल है, वहां पे स्केल कैसा है सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम में आएंगे न्यूमेरिकल्स तो आ सकते हैं ना, बहुत सारे स्कूल में नहीं पढ़ाते, स्किप कर देते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो जब तक इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली हाथ में नहीं है तो वो कैसे समझने का डिफिकल्ट है, बट अभी विद दिस थ्योरी इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, जस्ट क्लोज दिस। क्या करना है इसको एंड करना है। भाई क्या आवाज बनाता है आवाज नहीं क्या है उसका मजे तो बोलता ही नहीं ये ऐसा आराम हो जाता ठीक है कुछ समझा अरे बैठा आराम से ऐसा ऐसे करना प्लीज ये वाला